2, 1 and 2, 5 are opposite corners of a square. Opposite corner means opposite vertices of a square. Then side of the square equals to, what is the length of the side is our question. You are given the options. Option A 4, option B 2 root 2, option C is 3, option D is root 2. These are two opposite corners of the square and it is asked to find the side of a square. Options are A, B, C, D, 4, 2 root 2, 3 and root 2. So no, 4 is not answer. So A is not answer. 2, 1, 2, 5 are the opposite corners of a square. 2, 1 and 2, 5. See here. Yes, Aditya. See here. Okay. B. B is answer, right? B is answer. See here. 2, 1 and 2, 5 are the opposite corners of the square. B answer है. बराबर है B. Okay. Now how? See here. This is a square, yes, 2 root 2. This is a square, 2 root 2. Yes, you are right. Now it is asked. Yes. You have the two corners. 2, 1 and 2, 5. 2, 1 and 2, 5. These are the corners. These are the corners of a square. 2, 1 and 2, 5. So by distance formula, if these are the corners, see here, these are the corners A, B, C, D, B. These are the two corners, opposite corners. So their distance between them will be the length of diagonal. Length of diagonal will be what? Distance between these two will be the length of diagonal. I will find the distance between these two. See here, to find distance between them, we use just distance formula. 5 minus 1, 4, 2 minus 2, 0, x2 minus x1, 0 square, plus y2 minus y1, 5 minus 1, 4, 4 square is 16 and it's a square root. It is 4, but 4 is a value of diagonal of a square. As 4 is a diagonal of square, it is asked to find the side of a square. What is the relation between side and diagonal of 4? It is a 4. How will you find the side? How side is related with a diagonal? Side is always 1 upon root 2 of the diagonal. 1 upon root 2 into diagonal is the side of the square. So 4 upon root 2 and 4 upon root 2, the calculation will be, how will you calculate 4 upon root 2? 4 upon root 2, 4 into rationalization root 2 upon root 2 into root 2, that is 2 and 2 2s are 4. So the answer is 2 root 2. Directly the answer is 2 root 2. Side is a side of a square is 2 root 2. These are the opposite corners. These are the opposite corner. Distance between these 2 points, opposite corners. Opposite corners, not the adjacent corners. See the difference. अगर ये adjacent होते हैं, तो side of square will be 4. Side of square will be 4. Again, if these are, you were having the points 2, 1 and 2, 5. 2, 1 and 2, 5. How will you find the distance between such points? Remember. Hello? Bolo. Hello? Hello? Hello?
हाँ बोलिए. हेलो सर. Yes. हाँ sir, can you explain a little bit clearly, sir? We are not able to follow the diagram properly. Okay, okay, okay. वो सब ठीक है, उधर ठीक है. उसके अंदर पूरा गिचमिच दिख रहा है सर. थोड़ा क्लियर कर Okay, दे सर okay. पिक्चर प्लीज. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. कोई बात नहीं. करेंगे, करेंगे. बहुत सही. Good, 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 good. Okay, okay, okay. See here, we have the corners of the squares, opposite corners of the squares. I am not considering x-axis and y-axis. देखिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? अब देखो नहीं आवाज सर, आ आती रही है, है? आ रही है. आ रही है यस आवाज? सर, यस सर, तो यस ओके, सर. कोऑर्डिनेट्स में आपको बताता हूँ. ओके, we have the one point that is one of the corner means vertex. ओके 2 1 ओके. and 2 5 वर्टेक्स vertices 1 both are 2 5. 2 1 and 2 5 opposite vertex, opposite corners. The word is used opposite corner. Opposite, yes, Opposite. opposite. These Yes. two are opposite, not adjacent. And now No, it is opposites. asked to find the side. Side find करना है. But we can find what? We can find diagonal. Okay. So Diagonal. to find diagonal, we Okay. use the distance formula. And the distance formula, Distance we have to formula. use the distance formula. Yes. The answer is 4. अब तो आप आ जाएगा distance formula का answer. ठीक है. Okay. x2 minus. तो distance formula से ये आएगा 4. Then side and diagonal में एक relation होता है. Yes. Side and diagonal में एक relation होता है. इसका √2 times ये होता है और इसको √2 divide करने के बाद side मिलता है. So 4 upon √2 will be the side of a square. See the relation. Always. हाँ. Diagonal Yes is sir. divided by √2, we get a side, and side is multiplied by √2, we get the diagonal. This is a relation. Okay, well-known relation from geometry. So 4 upon √2, calculate it, rationalize it, I think. And yes, 4 √2 multiplied by √2 upon √2 for rationalization. So √2 into √2 becomes 2, and 2 divided to 4, it is 2. And 2 √2. Yes, this part is an isosceles triangle. Because this part becomes the isosceles triangle. Both are the isosceles triangle in the square. Okay, you got my point? Hello? Hello? Next question. That was an interesting question and simple question it was. But we use what? Keep in mind what we are going to use. Okay. In this problem, we use distance formula and the relation between diagonal of a square and side of a square. Again, next question. See, here in each problem, generally we use two conditions. There are two conditions, then and then problem. Now we have a question, a circle with center. Circle with center. Center of the circle is 3 minus 4. Touches x-axis. What is the radius of circle? What is the radius of circle? Center of circle is 3 minus 4 and it touch x-axis. It touches x-axis. Then what is the radius of circle? Very simple question. 5 3 9 by 2 4. 5 3 9 by 2 4. Circle has a center 3 minus 4, which is touching x-axis. Yes, Tejesh.
What is the radius of circle? It's our question. Radius of the circle is, radius बहुत सही, radius. See here, let us consider. नहीं 5 नहीं है radius, 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, radius है 5, 3, 9/2, 4. These are the 4 options. Let us consider the look of this problem. Center of the circle is 3, -4 and it is touching x-axis. Yes. Center of the circle is ohm. 3 - 4 is the center of the circle and it is touching x-axis. See here, keep in mind, when circle touches any one of the axis. See here, we have a circle. When you draw the circle which is touching x and y axis, here the circle is going to touch x axis. 3 - 4. Yes, सही है. So 3 - 4, x coordinate is 3 and y coordinate is -4, whatever it may be. And the circle is touching the x axis, 3, -4. Center of the circle. When circle touches x axis, we will keep only in mind the circle is touching x axis. We are not going to consider whether it is touching or intersecting y axis. We will not think it. Yes, there is some case. 3 - 4. Now this is the center of the circle. Okay. Now when circle is touching x axis, means axis is a tangent to the circle. When x axis becomes the tangent. Yes. नहीं. Answer 4 है. X axis become the tangent to the circle. X axis is tangent to the circle. Yes. X axis becomes the tangent to the circle. X axis जो है सर्कल को tangent बनता है. इससे आपको लॉजिक आना चाहिए. टचिंग करने वाली, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंट होता है. कीप इन माइंड, मैथमेटिक्स एंड साइंस ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. अब आगे कभी भी जाओ तो ये वर्ड याद रखो. ईच एंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैथड टच करता है, टचेस. So this is the center of the circle, 3, -4. This is the x-axis. Yes, 4. सभी के लिए है. So when a line touches a circle, it becomes the tangent. As it is touching the circle, it becomes a tangent to the circle. All of you know that. When we join this point of contact to the center of the circle, this angle is 90 degrees and this distance is what? Radius of circle. The distance is radius of circle. Now, this is your center of the circle. So distance of center from this line is the radius. So we'll find distance of point from the x coordinate, x axis. And yesterday I explained about distance of point from x axis is related with y coordinate. So y coordinate is -4. Y coordinate is -4. As -4 is a y coordinate, take its modulus. The distance will be 4. Hence, radius of circle is 4. That's why the radius of circle is 4. See here, we use two concepts. The one concept is that x-axis touches the circle. As x-axis touches the circle, it becomes the tangent, and distance of tangent, distance of point of contact on the center becomes the radius. This is the first concept. Now next, see here, it was very simple question. The circle with center 3 - 4 touches x-axis. It was the question. अब ये x-axis को टच हो रहा है, मतलब उसके सेंटर का x-axis से जो डिस्टेंस है वही रेडियस है. जब किसी लाइन को सर्कल टच होता है तो उसी लाइन से जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होती है. टेंजेंट ऑन रेडियस प्रॉपर्टी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी ऑफ योर सर्कल.
So this distance becomes the radius. Now distance of point from next concept है, अभी ये radius बन गया. Distance of point from axis, अभी ये x axis है, x axis से point का distance वो y coordinate से related होता है. y coordinate -4 है, तो उसका mod लीजिए, वो distance होगा modulus of -4 na +4. Distance is always positive. So this distance is 4. अगर ये distance 4 है, मतलब radius 4. See the question. The question was yes, Akshay. Sir, I have a doubt. What? सर अगर सर्कल वाई एक्सिस को अगर टच करता तो क्या 3 रेडियस होता? हाँ, बट ये सर्कल इसी केस में दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा. रेडियस 3 होता है, बराबर है, रेडियस 3 होता है. बट जब सर्कल एक एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को, तो वाई कोऑर्डिनेट्स का मॉडुलस होता है रेडियस. अब वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस होगा रेडियस. और दोनों एक्सिस को जब सर्कल टच करता है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस और वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस सेम होता है. यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? सर वो आपने जो आखिरी का कंसेप्ट बोला कि दोनों का जब टच होता है उसका एग्जांपल दे दो सर बोर्ड पे प्लीज. बहुत सारे एग्जांपल है. देखो ये मेरा सर्कल है. इफ इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस, see here, if we have a circle and if it touching both the axes, I have drawn this is a y-axis and I am going to draw the x-axis. See here, this is one of the circle, second quadrant में. अब हर quadrant में ऐसा circle corresponding radius के साथ, radius बदल गई, circle बदलेगा. देखिए ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो distance है ये x coordinate से related होता है. देखो ये distance, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है. अब मैं लेता हूँ कुछ कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ. समझो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये x कोऑर्डिनेट हुआ -2, -2 0, और ये कोऑर्डिनेट्स हुआ 0 2. देखिए दिस वन, see are the distances. These are the radii, and both the radii, this is radius. So this is 2, this is 2. Both are 2. What are the coordinates of the center? -2 +2 are the coordinates of center. Center के coordinates same रहेंगे numbers में, but उनके sign different हो सकते हैं, same भी हो सकते हैं. ये radius के ऊपर depend है. अगर radius r है तो -r + r +r +r. radius अगर r number है positive, +r -r, जो r की वैल्यू है रेडियस की, -r ऐसे 4 केस आएंगे. हाँ अक्षय, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बोलो. नहीं सर, हो गया, वो क्लियर हो गया. मैं रेज हैंड हटा देता हूँ. सब ओके, चलो कोई बात नहीं है, चलती है. हाँ सर, समझ में आया. क्वेश्चन सही था लेकिन यस, वो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, कोई बात नहीं. यस हाँ बोलिए, बोलो. Sir, I have a doubt, sir. बोलिए ना. Sir, What? how did this -2 and 2 came? यस, मैंने ये लिया है. आई हैव टेकन रेडियस एज अ 2. मैंने रेडियस 2 But लिया sir, है. ये जो but sir, ये रेडियस मैंने 2 लिया है. हाँ, नया क्वेश्चन है. मैंने क्या किया, अच्छा. रेडियस 2 लिया, r = 2 लिया मैंने. तो रेडियस अगर 2 है ना, हाँ, 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 तो रेडियस 2 है तो ये डिस्टेंस 2 है. ये डिस्टेंस 2 है मतलब ये x कोऑर्डिनेट इससे रिलेटेड होता है ना, इतना डिस्टेंस. देखो ये दोनों सेम होते हैं. बहुत सिंपल हाँ बता रहा सर. हूँ. ये हुआ -2 क्योंकि निगेटिव है, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं. मैंने सेकंड क्वाड्रेंट पहले बताया. हाँ, yes, अब हम yes. ये डिस्टेंस भी 2 है, रेडियस तो y कोऑर्डिनेट 2, तो इसलिए ये 2 और ये -2 हो गई बात. Okay, यू गॉट sir. माय पॉइंट. हाँ, left side. अभी देखो,
अगर Yes, sir, I इधर got- पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में होगा तो रेडियस जो है वो RR होगा, RR। थर्ड क्वाड्रेंट में R Okay. इज अ पॉजिटिव नंबर, तो -R होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में +R -R होगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड है, Yes, व्हेन sir. इट इज टचिंग बोथ द हाँ, एक्सिस। sir. समझ में आया? Okay, sir. Okay, हाँ, sir. okay. Thank you. चलता है, कोई बात नहीं है। नए क्वेश्चन। So let us move towards the next question. In this question, okay, again I have a question. Midpoints of, very interesting question. नील बेटा, हाँ 2 मिनट। यस रुको। दस 5 मिनट चल रहा। हेलो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसे दिया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल। थोड़ा सा रुकावट है, थोड़ा 1 मिनट वेट करो। और उसका डबल किया तो 20 आता है, ये हमारी हिंट है। ओके